Dear students, we today give you the explanation of the second part of the second story, I Want to Drive a Car. And we will start from page number 18, last but second paragraph, line number 30. The cry of not having money to do anything except to carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Ferozabad. राइटर दुख के साथ कहती है कि हर घर में ये चीख पुकार सुनाई देती है कि उनके पास उतनी दौलत नहीं है कि जिससे वो चूड़ियाँ बनाने के कारखाने के अलावा कुछ कर सकें। उनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। जवान लोग भी अपने बुजुर्गों का ये दुखड़ा दोहरा रहे हैं। वक्त के साथ फैरोज़ाबाद में लगभग कोई तब्दीली नहीं आई है। In Ferozabad, little has moved with time, it seems, in Ferozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. बरसों के की दिमाग को सुन करने वाली मशक्क़त और मेहनत ने उनकी पेशकदमी और ख्वाब देखने की तमाम सलाहियतों को ख़त्म कर दिया है. Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. राइटर जवानों की एक जमात से पूछते हैं कि वो खुद को एक कोऑपरेटिव में मुनज़्ज़म क्यों नहीं करते हैं. ये लोग दलालों या दरमियानदारों के एक तबाहकुन दायरे में गिर चुके हैं जिसमें उनके बाप दादा फंस चुके थे. जवाब में ये लोग Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. There is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. ये लोग राइटर जवानों की एक जमात से पूछते हैं कि वो खुद को एक कोऑपरेटिव मुनज़्ज़म क्यों नहीं करते हैं. ये लोग दलालों या दरमियानदारों के एक तबाहकुन दायरे में गिर चुके हैं जिसमें उनके बाप दादा फंस चुके थे. जवाब में ये लोग कहते हैं कि अगर वो मुनज़्ज़म भी हो जाएं तो भी वो पुलिस के सामने जवाबदेह होंगे जो उनको मारपीट और जेल में घसीट कर कैद करके उनसे कहेंगे कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है. उनमें कोई लीडर नहीं है जो उनकी मदद कर सके. कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें चीज़ों को मुख्तलिफ नज़र से देखने में मददगार या मदद दे सके. उनके बाप उन्हीं की तरह थके हुए हैं. ये लोग न ख़त्म होने वाले चक्करदार अंदाजे में अपना दुखड़ा बयान करते हैं जो गुर्बत से बेहिसी से लालच और नाइंसाफ़ी पर जाकर ख़त्म होती है. Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. राइटर कहते हैं कि उनकी बातें सुनकर उसे दो मुख्तलिफ किस्म के जहानों का मुशाहिदा होता है. एक जहान एक ऐसे ख़ानदान को ज़ाहिर करता है जो गुर्बत के जाल में फंस चुका है और उस पर ज़ात के दाग का बोझ, बदनुमा दाग जिसमें ये पैदा हुए हैं. The other, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats, and the politicians. यानी दूसरा जहान जिसमें साहूकार, दरमियानादार यानी दलाल, पुलिस, कानून के पासदार, अफसरशाही और सियासतदानों का तबाहकुन दायरा. यानी इन दो जहानों में ये गुर्बत ये लोग फंसे हुए हैं जो उनको
غربت سے باہر نکلنے کا موقع فراہم نہیں کرتا ہے. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. ان سبوں نے بچوں پر بوجھ لاد دیا ہے جس کو یہ اتار نہیں سکتے ہیں. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. جب تک کہ بچہ ہوشیار ہو جاتا ہے وہ اس سارے ظلم کو اسی طرح فطری طور پر قبول کرتا ہے جس طرح اس کے باپ نے کیا تھا. To do anything else would mean to dare, and daring is not part of his growing up. کوئی دوسرا کام کرنے کا مطلب ہے نظام کے ساتھ ٹکراؤ. یہ ٹکراؤ ان لوگوں کی نشو و نما کا حصہ نہیں ہے. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. رائٹر کہتے ہیں کہ جب وہ مکیش میں ٹکراؤ کی ایک چنگاری دیکھتی ہے وہ خوش ہو جاتی ہے. مکیش اس بات کو دہراتا ہے کہ وہ ایک موٹر میکینک بننا چاہتا ہے. He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. وہ کہتا ہے کہ وہ گیراج میں جا کر کام سیکھے گا لیکن گیراج اس کے گھر سے بہت دور ہے. وہ بضد ہے کہ وہ اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے اس تمام فاصلے کو پیدل طے کرے گا. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. رائٹر اسے پوچھتے کیا وہ ہوائی جہاز اڑانے کا بھی خواب دیکھتا ہے. یہ سن کر وہ اچانک چپ ہو جاتا ہے. وہ نگاہیں نیچے کر کے نفی میں جواب دیتا ہے. In his small murmur there is an embarrassment that is not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few aeroplanes fly over Firozabad. اس کی دھیمی اور لڑکھڑاتی آواز میں پریشانی اور تذبذب ہے جو ابھی پچھتاوے میں تبدیل نہیں ہوا ہے. وہ گاڑیوں کے خواب دیکھنے میں مطمئن ہے جو وہ اس کے قصبے کی گلیوں میں تیزی سے دوڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. فیروز آباد کے آسمان میں کچھ ہوائی جہاز بھی اڑتے ہیں. فیو ایروپلینز فلائی اوور فیروز آباد. فیروز آباد کے آسمان میں کچھ ہوائی جہاز بھی اڑتے ہیں. Dear students, this was the explanation of the second part of the lesson Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, and the name of the second part was I Want to Drive a Car. With this, we complete the explanation of this second chapter of Fleming textbook of class 12, Lost Childhood, Stories of Stolen Childhood, written by Aeneas Jung. I hope you have enjoyed this series of lectures on this chapter. Thank you.